Hello. Today we have seen the chapter number 2 C function of management. Last chapter we have seen the various scientific management principles and modern management principles of Henry Fayors and F.W. Taylor's in chapter number 1, and significant role of management and nature of management in the business terms and conditions will be required for the successful business terms. Then chapter number C, function second function of management. In this chapter the various functions of management: first is planning, second is organizing, stuffing, directing, coordinating, and controlling. Then, first function of management is a planning. Function of management. What is the function of management in business? The management is what manager does. In definition of management is what he does and what he work in the management process. Then first term is a planning. Then planning is very much important. आप जब कोई भी काम करते हो तो प्लानिंग से करोगे तो और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा. इन ऑल्सो इन बिजनेस प्लानिंग इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑफ प्लानिंग. यह बेस होता है प्लानिंग का. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग इज़ अ बेस. व्हाट इज़ अ डिज़ाइनिंग एंड प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लांटिंग अकॉर्डिंग इज die key achieving the objectives of organizations. The keys, those keys are very much important. Planning and implementing implant. जो भी आप वर्क करते हो तो इम्प्लांट करोगे, इम्प्लानिंग करोगे और प्लानिंग थ्रू करोगे तो वो और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा. देन डेफिनेशन. दोज two persons are define the term planning. First is O'Donnell and second is James Toner. First is planning. Planning is deciding in advance what to do, how to do, and when to do. Means planning bridges the gap from where we are and where we want to go. It makes possible things according to achieve the goals. Then James Stoner is define the functions is planning. Planning is the process of established goals and suitable course of actions for achieving the various goals in the management process. देन क्या है? प्लानिंग इज़ द प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है जो आपको जो एम होता है आपका कोई भी एम इन फ्यूचर टर्म्स एंड कंडीशंस इन ऑल्सो बिजनेस इस एक स्पेशल एम होता है. उसके थ्रू क्या चलता है? सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन. उसके पास से आपको एक्शन करना पड़ता है वो गोल अचीव करने के लिए. इट्स कॉल्ड एज अ प्लानिंग. देन इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. It is a various terms and various types of importance of planning. Then first we have seen one by one various steps are involved in importance of planning. Then first term is help to set clear objectives. Objective means target. You can plan each and concern with setting objectives, targets, and formatting plans to achieve them. It helps. What is the objective? Helps the managers to analyze the present conditions of the organization and the basics to identify the ways attending the desired position in the futures. हेल्प टू क्लियर क्या करता है? हेल्प मदद करता है. किसके लिए? आपका जो टारगेट बिजनेस में है वो पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक प्लान करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको उस पर प्रोसेस करना पड़ेगा. टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एक कंडीशंस के थ्रू आपको वो प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा विद इन द टाइम एंड पीरियड. देन सेकंड पॉइंट, प्रोवाइड पाथ of actions.
various paths. Paths means direction. Various direction provided for actions. First is planning, ensures that the goals or objectives are clearly stated. They are act as a guide and they provide directions for doing the right things at the right time with right way. Provide path of actions. You have provide various process and directions doing right things and right time, things and right time and right way. आप जो प्लान करते हो वो क्या होना चाहिए, उस पे सही दिशा होना चाहिए, सही टाइम होना चाहिए और राइट वे होना चाहिए. दैट हेल्प्स द एम्प्लॉयज to that know what is the organization has to do and what they must do achieving the goals. the employees को पता होना चाहिए वो क्या वो करते हो, कौन सा काम करते हैं in the organization to achieve their goals. Third is planning improves performance. The plan helps the manager to improve their performance in the year and objectives and selecting objective means what, terms and conditions. Hence the course of action planning leads to efficient works of the employees. Planning the employees can work according to time guidelines. This improvement in performance results in the higher profitability. क्या होगा उससे, higher more and more profit for the organization and it improves to performs the results in the higher level management process. Then say fourth point, minimize the risk. क्या करो, रिस्क मतलब धोखा, मिनिमाइज मतलब कम करना. क्या करेगा, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक्स. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड फ्यूचर चेंजेस बाय डिसाइडिंग टू एडवांस द टास्क टू द परफॉर्म. एक टास्क क्रिएट करना है और इसके हिसाब से आपको फ्यूचर प्लानिंग करना पड़ेगा और फिर प्लानिंग करके वो काम पूरा करना पड़ेगा रिस्क के हिसाब से. देन टू परफॉर्म प्लानिंग शोज द वे टू डील विथ चेंजेस एंड अनसर्टन इवेंट. चेंजेस और रिस्क कैन बी totally demanded in the employees of the future. Then fifth point, planning to utilize of resources. Utilize मतलब to decrease of resources. Organization plans are prepared by taking into consideration the availability and the proper allocation of resources. यूटिलाइजेशन रिसोर्सेस मतलब अलग अलग जो आपको काम दिए गए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को थ्रू, उसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा और उसकी इफ़िशेंसी मतलब मर्यादा कम करना पड़ेगा और उसके हिसाब से जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएगा वो एम्प्लॉयज़ को मोर एंड मोर बेनिफिट्स देगा इन द ऑर्गेनाइजेशन. देन 6 पॉइंट्स हेल्प्स टू डिसीजन मेकिंग. देयर आर वेरियस alternatives or terms or steps in the front of management to achieve goals. Planning helps the management to select the best alternatives or steps in to achieving their targets and goals. All alternative decision is most of important to decision मतलब कोई भी आप काम करोगे उस पर आप जो भी निर्णय लोगे वो आपके मैनेजमेंट के हिसाब से होना चाहिए. इट्स पॉसिबल और positive effect in the management process. Then 7 point, useful in setting the standard of control. Planning and controlling is the same process. जब आप प्लानिंग करते हो तो आपको उस हिसाब से कंट्रोल करना भी आना चाहिए. सच एज एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी compare with the standards and manager can find out the deviation. It is also important for maintaining disciplines and
वर्किंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट मेंटेन्स, क्या करेगा, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग मेंटेन डिसिप्लिन in working place of organization to make the discipline or improve the discipline in the organization process. Then 8 point, facilities coordination of all activities. Planning functions coordination like that. First is coordination, controlling and planning is coordinate to give the various facilities to employees. Various departments work as per plan and coordination is achieve the successful in the organization and business terms. Then facilities other management functions. Every organization functions is achieve goal and is a set of planning. First stage is planning is to achieve the goal and then set of the planning stage. Then other functions such as organization, stuffing, etc. is can be taken to give the various facilities and functionalities in the functions of management process. Then 10 point, promotes ideas to give the directions and ideas in the employees in organization. Planning is a basic functions. Let us see, the planning is a basic functions of organization and it is a process, and it is also the process of decision making which involves to आइडियाज़ अदर क्रिटिकल थिंग. कोई भी क्रिटिकल थिंग है तो आपको आइडियाज़ और डिसीजन लेना आना चाहिए और आपके पास प्लानिंग होना चाहिए. प्रॉपर प्लानिंग इज गिव द वेरियस रिजल्ट्स एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज growth of your organization process. Then prepare a plan for one day picnic of your class or friend trip. In short, planning plays the important or vital role or most important role in every life of organization as well as in individual future is highly uncertain of business environment process. Then next, organization. This is the planning and second point is organization. In planning also there is a various steps and conditions will be applied, and the karta of the family is various important role of planning in their families. Karta directs, guides, directions and coordination to keep control on every task. Karta is doing with the help of other is called as management. जो आप करता मेन जो फैमिली मेम्बर होता है जो प्रोसेस करता है इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट देयर फैमिली के लिए. इस